लोग क्या कहेंगे, या अगर मैंने बड़ी मिस्टेक कर दी तो क्या होगा, मैं फेल हो जाऊंगा, व्हाट इफ आई फेल। बच्चे बहुत ज़्यादा डिले करते हैं चीज़ों को, दे कीप अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन द प्लेट, पूरा नहीं कर पाते, फिर उनको डिप्रेशन होता है और फिर वो उनके अंदर पेशेंस भी नहीं है। दिस यंगर जनरेशन डू नॉट हैव द पेशेंस। Good evening, Shivam. Good evening, everyone. Good evening. गुड इवनिंग टू यू मैम एंड वेलकम टू डिफेंस एग्जाम मास्टरी, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसको बच्चे बड़ा प्यार करते हैं रिटन एग्जाम्स के लिए, हमारे पॉडकास्ट सीरीज के लिए और आप जैसे सीनियर्स के लिए जो जस्ट एक कॉल पे बच्चों के लिए अवेलेबल रहते हो। एंड आई एम रियली हम्बल्ड, आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। जस्ट मैंने आपको कॉल किया एंड देन यू गॉट अस सम टाइम, आपने टाइम दिया कि हाँ चलो लेट्स डू इट। और आपने खुद से बोला था कि हम प्रोक्रेस्टिनेशन पे सेशन लेने वाली हूँ मैं, एंड दैट वाज योर टॉपिक। तो उस पर भी बात करेंगे कि किस तरीके से ये जो इनका एक हैबिट बन गया है प्रोक्रेस्टिनेट करने का चीज़ों को, हाउ दीज गाइज कैन बिकम लीडर्स इन लाइफ। मैम यू आर अ लाइफ कोच एंड आपसे बेहतर कोई बता ही नहीं सकता कि हाउ टू बी अ विनर इन लाइफ। तो हियर वी आर टुडे लाइव विद लेफ्टिनेंट कमांडर साधना गिरी मैम। साधना गिरी मैम हैज बीन अ नेवल ATC ऑफिसर और मैम उसके बाद लाइफ कोचिंग में चली गई हैं। मैम के और भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं, तो मैम के थ्रू ही जानने वाले हैं। तो मैम स्टार्ट करना चाहूँगा सबसे पहला क्वेश्चन कि अपने बैकग्राउंड के बारे में आप थोड़ा सा कुछ बताइए कि हाउ डिड यू लैंड अप इन नेवी, व्हाट वाज योर इनिशियल बैकग्राउंड एंड कैसे आपने नेवी की तरफ रुख किया लाइफ में। Alright. So I'm so happy and excited to be here. Thank you for having me. Regarding my journey, let me begin with my NCC, exposure that I had in my school for 2 years and in my college for 3 years. I did BSc Physics, and during that time I was very active. In fact, when I was young also, 7 or 8 class, I was in the NCC, and then it didn't mean much. It didn't mean much, but as I joined it in college, it really had a lot of, it left a lot of impact on me. It taught me a lot, and any science student, and in fact now we have engineering students also doing NCC, and they will vouch for it that it's not so easy to be a science student and go through your NCC camps and all those national camps and everything, which gives you good exposure, which trains you to be a better team player and a better leader in life. So I had that kind of an exposure, and so then all I had in my mind was to become someone like Kiran Bedi, because I never had anyone around me. I never saw any officer per se. Our ANO was a lady, a woman. We used to call her ma'am, of course. And apart from her and apart from one male officer who was our battalion commandant, I had never seen an officer. So उसके अलावा NCC के अलावा कोई exposure नहीं था. I also come from a very small village from the eastern part of UP, and forget about being in the armed forces, Navy or anything. I mean, working was never a normal thing there. So yes, I still wanted to do something different. I just wanted to break that norm. I didn't want to settle for anything less than what I wanted, and yeah, so I worked hard in my college, and I appeared for army. Army was the only thing I had seen. Like, I was an army wing cadet, so army was the only thing I had seen. Army uniforms, because जब हम अपने डायरेक्टरेट में जाते थे, अपने बटालियन में जाते थे, तो वहाँ पे आर्मी ऑफिसर्स की, वुमेन ऑफिसर्स की शायद पिक्चर्स लगी होती थी, तो वो एक इंस्पिरेशन था ऑफ कोर्स कि शायद हम भी यहाँ हो सकते हैं।
और फिर आर्मी की इंटरव्यू हुई. आई वॉज रिकमेंडेड एंड एवरीथिंग, बट प्रॉब्ली देयर वर वेरी लेस वेकेंसीज एंड I couldn't make it. It was heart breaking for me. And then Navy came, and then it happened. I was persistent, and I had made my plan B as well. I was working hard in my studies. I knew कि अगर studies नहीं करूँगी, this is my doorway, to the world. अगर ये नहीं मैं अच्छे से इसका एक जो अपॉर्चुनिटी मिली है, जो बहुत सारे हमारे भारत में उस समय भी बहुत सारी लड़कियों को नहीं मिलती थी, तो मुझे लगता था अगर मैं इसका सही इस्तेमाल नहीं करूँगी, इस अपॉर्चुनिटी का अपना 100% नहीं दूंगी, तो मेरे लाइफ में फिर कोई कुछ अच्छा कुछ भी नहीं होने वाला है. So I used to work hard in my studies. I scored 87% in my graduation, and then I went for post-graduation. And while I was in my final year of post-graduation, almost done, I got into Navy. In fact, prior to Navy, I was heartbroken because I couldn't get into the army, and so तब ये लगता है ना, एक छोटा सा सपना टूटता है तो ऐसा लगता है कि लाइफ इज अ फेलियर. सो मुझे भी वैसा ही लगता था, बट nevertheless I had to be independent. तो मेरी फ्रेंड के पेरेंट्स एक प्रिंसिपल और हेडमिस्ट्रेस थे एक स्कूल में गुजरात में. सो मैं वहाँ पे they offered and I went there. They knew I was good in studies and all, and I had scored well and all. So, and I was teaching also home tuitions and everything, maths and physics and all that to class 11, 10 and 11 students. So they offered us this, and I went there after my Navy interview, and मैं सोच रही थी कि मेरे साथ शायद नहीं होगा, मुझे नहीं मिलेगा शायद. Although I knew that I had given my 100%, और but फिर भी ये कहीं पे ये लग रहा था कि नहीं होगा. तो I was already making my plan B while I was teaching. My plan B was civil services. तो बस शुरुआत करने ही वाली थी civil services की. I was hardly 21, 22 करने ही वाली थी. तब तक ये कॉल आया मेरे फादर को. मैंने ऐसे वहाँ से कॉल लगाया, मेरे पास फ़ोन नहीं था, एक बूथ से फ़ोन लगाया और मैंने पिताजी से बात की. घर पे फ़ोन था, तो बात की, और तो उन्होंने बताया गुड न्यूज़, और फिर मैं बहुत खुश हुई. और मतलब पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ, तो मैंने बोला नहीं, मुझे नहीं, आप मतलब कुछ भी बोल रहे हो पापा, आप ऐसे ही है ना, मेरा ये रखने के लिए, मुझे खुश करने के लिए. तो he said no, आप इस नंबर पे फ़ोन कर लो और पता कर लो क्या क्या है, कब है, कैसे जाना है. एंड आई डिड. और बस वो एक जो कंफर्मेशन का एक मोमेंट था, जब माय फादर टेलिंग मी कि हो गया है, आई कांट टेल यू कि वो कैसा मोमेंट था. एक बहुत ही यूनिक मोमेंट था, मिक्स्ड फीलिंग थी, और बस आगे बढ़ना था. अब क्या, सपना पूरा हो रहा था, तो बस एकेडमी पहुँचे और हो गया मतलब समथिंग यूनिक and something which I had always dreamt of so far. Of course, not in the army uniform, but the Navy uniform. It's all the same whether you are in the army, Navy, or Air Force. But the best part about my journey is that I was an Air Wing, Army Wing cadet. I joined the Navy and I was trained by the Air Force. I was doing a job job in the aviation branch, and was trained by the Air Force. So that's the best part of my journey. So what else can I ask for? So this is the best of both worlds you was getting. आप आर्मी विंग में थे, फिर आर्मी में आप सेलेक्ट हुए, मेरिट आउट हो गए, then Navy came in, then you joined the Navy, and then you became an ATC officer. एक जर्नी याद आ रही है मैम, दिसंबर के टाइम पे लास्ट ईयर I interviewed a candidate, अंशु यादव. She is now a commissioned officer. वो BSc सेम आपकी वाली कहानी थी उसकी. She was from बहादुरगढ़ हरियाणा की एक बच्ची थी, फादर किसान थे, और उसका बस 20 या 30 टाइम्स वो एग्जाम्स क्वालिफाई करी थी बहुत सारे गवर्नमेंट के, बट उसका हो नहीं रहा था कहीं. वो SSB की तैयारी डेडिकेटेडली की, उसका SSB में हो गया मैम. एंड शी वाज, आई थिंक मैथ्स की वैकेंसी थी, तो मैथ में वो पहली लड़की थी ऐसी थी, फिजिक्स में या मैथ्स में शी वाज द ओनली वन.
तो वो परसिस्टेंस की कहानी है। तो आपको देख के ना मैम वो मोमेंट मुझे याद आ गया कि यू डिडंट गिव अप एक्चुअली ना, आप लगे रहे। I didn't give up. तो यही तो एनसीसी ने सिखाया था, एनसीसी ने ये डिसिप्लिन और परसिस्टेंस और पेशेंस सिखाया था। और बस ये था कि बस लगे रहना है, ये नहीं तो कुछ और अच्छा होगा। So ऐसा नहीं था कि I was becoming depressed or something. I was already planning the next thing in my life. Right. Exactly, मैम अगला सवाल आता है, जैसे आपने बताया आपकी लाइफ जर्नी जैसी रही। अब जैसे आप रिटेन, आपका डायरेक्ट एंट्री था, यू वेंट ऑन टू जॉइन द एसएसबी सीधा। तो एसएसबी एक्सपीरियंस के बारे में आप कुछ बताओ मैम, कैसा, मतलब कुछ ऐसा यादगार मोमेंट रहा हो आपके एसएसबी में व्हेन यू हैव गिवन 2 एसएसबीज आई गेस। तो आपके जो एसएसबीज रहे उसमें कुछ ऐसा फनी मोमेंट रहा होगा जब आपको लगा कि नहीं यार आई एम टोटली इन, मैंने मेहनत करी है, आई विल मेक इट। तो उसके बारे में मैं जानना चाहूंगा, बिकॉज दीज यहाँ पे जो बच्चे हैं ना मैम, उनको बड़ा डर लगता है कि यार एसएसबी ऐसा है, एसएसबी ये है वो है, पर मुझे लगता है कि इट्स अ वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी ट्रूथफुल प्रोसेस, वेरी वेरी प्रोसेस ओरिएंटेड थिंग। अगर आप उसको फॉलो कर लोगे तो आप यू विल बी थ्रू, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली आपको। तो आप अपनी एसएसबी जर्नी को कैसे एक्सप्लेन करोगे व्हेन यू वाज देयर? Yes, so my SSB journey, let me tell you कि जितने भी SSB मैंने दिए हैं, कुल मिला के 3 SSB दिया है, it was, है ना। तो तीनों SSB में मैं ये कहूँगी कि पहले 2 SSB में I was like नहीं, करना है, मुझे करना है, ऐसा टाइप का, a bit of stress and everything. But SSB थी मेरी थर्ड SSB में I was prepared, I knew what is going to happen and everything. जो भी गलतियाँ थोड़ी बहुत हुई थी, तो I knew कि how I have to outperform my own self than last 2 times, and that was there in mind. But I really thoroughly enjoyed the third time when I really got in the merit, and I was now given a call letter to join. So I really enjoyed, and that is the most memorable SSB of all the 3 SSBs that I had given. So when I enjoyed the most, it was the best, because probably the stress level didn't let me perform. Probably कहीं कुछ ना कुछ शायद चूक हो गई होगी, but this time I thoroughly enjoyed. I remember each and every detail of how we girls interacted, how it was in Bhopal, and how we went for shopping, and we just all sat together in a circle and we chatted about our lives, about someone's boyfriend and all other things. So many things, and we really enjoyed. So when I enjoyed, and I performed better. अच्छा साधना मैम, एक ना सवाल आ रहा है मेरे मन में, लाइक आई हैव बीन अ हार्डकोर रिपीटर, आई हैव गिवन ऑल इन ऑल 11 एसएसबीज ऑफ रिटन एंट्रीज। तो एक सवाल होता है कि जब इंटरव्यूइंग ऑफिसर यूज्ड टू आस्क कि आपके सामने भी ये सवाल आया होगा कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन द आर्म्ड फोर्सेस, और पर्टिकुलरली व्हाई यू वांट टू जॉइन द नेवी। तो उसका आंसर आपकी तरफ से क्या था मैम? ये बहुत एक बच्चों के द्वारा डिमांडेड क्वेश्चन है कि आप ये जरूर पूछना सर मैम से। तो अभी मुझे स्पेसिफिकली पता नहीं है कि ये क्वेश्चन पूछा था और पता तो मैंने क्या जवाब दिया था, बट लेट मी टेल यू द पर्सपेक्टिव के व्हाई यू वांट टू जॉइन आर्म्ड फोर्सेस। आई वाज क्लियर, मैं अभी तक एनसीसी कर चुकी थी 5 years, मेरे पास एक सॉलिड एक रीजन था कि व्हाई नॉट, आई एम एन एनसीसी कैडेट। मैंने वो डिसिप्लिन लाइफ देखी है। सुबह जब बहुत सारे बच्चे हमारे कॉलेज के सैटरडे संडे चादर तान के सोते थे, तब हम सुबह उठ के जाके 4 बजे की बस पकड़ के हम 5 बजे 5:30 बजे अपने परेड ग्राउंड में पहुंच के मार्च कर रहे होते थे, है ना। सो वो कमिटमेंट और ये सी सर्टिफिकेट और जो अपने डायरेक्टरेट को रिप्रेजेंट करना, तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है, कहीं ना कहीं शायद कन्विंसिंग पॉइंट रहा होगा। प्लस आई वाज द एल्डेस्ट ऑफ द 4. I had taken some leadership responsibilities, so all in all मुझे लग रहा था कि I was prepared, and probably जो मेरी जर्नी थी, whether they were all progressive, मेरे 10th के marks से 12th के marks and then graduation के marks, it was clearly seen that I was progressing, I was doing better and better every time. So that was the thing. So probably
probably I told something like that about say NCC and that about my personal journey that was that eldest of the four, and I want that I just want to fulfill this dream because people used to think in my family that eldest of the four girls and they are burden, and it's a bad luck to the family to have four girls. How will they arrange the dowry? How will they get them all married in a good family, and so on and so forth. So I had that, and probably I would have narrated my journey. I exactly don't remember the thing, but this is what it was. And why Navy? Of course, I honestly I didn't have any convincing thing why Navy, but definitely armed forces. So I must have told that there is nothing specific, but also Navy was exploiting my technical knowledge that I had acquired so far through my graduation, and also I was also doing some diploma courses in computer and all that. So Navy was going to exploit it, and not so much in the army. So I would have somehow I would have related my professional academic background as well as the demand of the job that is there. मैम इसी से रिलेटेड एक अगला क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा. I would like to ask you another question is that कि you went into married and you went on to join the Indian Naval Academy. तो वो academy life जब जाता है एक बंदा, मतलब एक you are a young lad 21-22 years old and then you are a total civilian and आपकी life chill है, but आप तो NCC cadet थे, तो you had a थोड़ा सा idea कि हाँ यार रगड़ा तो लगेगा भाई. पर अब academy में actually when you are landing up there, तो वहाँ तो एक कल्चरल शॉक हो गया, एक अलग सीनियर्स का खौफ अलग है. तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? हाउ वाज योर एकेडमी लाइफ फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड? वो कैसी रही? उसके बारे में आप अपनी जर्नी शेयर करोगे हमारे साथ? So academy journey was smooth, I will say, very enjoyable because of all the ragda and punishments that we had. In fact, these made the life memorable, the punishments. And those were the funny moments, and it used to feel that we are short of time, or खाने का time नहीं मिल रहा है, things like that. But those moments become my like benchmark for me. कि मैं पूरे दिन I was busy, I was on my toes, and I never felt tired. I never felt कि अरे अब मुझे थकान हो गई है, because every moment I used to enjoy, and they never gave you so much time to think, to sit down and feel depressed. So they always kept you engaged, you always had the next agenda, अभी अगर lunch कर रहे हैं तो फिर lunch के 15 मिनट बाद you have to muster in your PT rigs or something. उसके बाद probably it is some big adjutant muster or something. उसके बाद probably some ragda time. उसके बाद probably something else, dinner or something, probably. Or so what I'm coming to say is that it was very busy and very lot of fun. Academy was a lot of fun, and I was vis-a-vis other candidates, I found that I was not struggling to run, है ना, जैसे थोड़े देर दौड़ लिया, हाफ गए, पीछे रह गए, फिर उनको मोटिवेट करना कि चलो चलो चलो, because we knew that team work and everything, और साथ लेके चलना, मोटिवेट करना, और उसके बाद पीटी भी बहुत जल्दी क्लियर किया, स्विमिंग बहुत जल्दी फटाफट सीखी, ठीक है. सो पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एवरीथिंग, ये एनसीसी ने काफी कुछ सिखाया था. सो दैट वेज my journey was not very difficult and very enjoyable, I will say. To sum it up, it was very enjoyable. And academy days are very very nostalgic also. मतलब जब हम बात करते हैं तो I can see that on your face कि you were thoroughly enjoying it while narrating it to me.
Yeah. कि हाँ In ये fact, ऐसे ऐसे था. in In a fact, very vivid and very clear details you told me कि हाँ ऐसे था. yeah. In And fact, एक बार regarding this, once I happened to express my joy, to one of the officers who was like divisional officers who was taking some punishment sessions, and he gave me more punishments. So somehow he saw that, oh, this girl is enjoying, this cadet is enjoying, and I got more punishment. But I never regretted it. I saw one of my friends who was so intelligent and smart got so many restriction runs. So smart, and such great caliber in speaking and debate and everything, just because she opened her mouth in the wrong moment, and the academy commandant was there. That's it. She got restriction runs. I don't know how many, but whenever we thought of her, whenever the name came, we found her running only with her all this thing. Yeah, not parachute. The bag. मेटल लोड जो होता है पूरा. Yeah, and the gun and everything. So yeah, but it was all memorable, very nostalgic, like you said. Right. मैम अगला सवाल आएगा बिकॉज आई वाज अ हार्डकोर फ्लाइंग एस्पिरेंट. मेरा प्लान ये था कि मैं पायलट बनूंगा. अनफॉर्चुनेटली नहीं बन पाया. देन मेरा प्लान भी ये था कि अगर मैं पायलट नहीं, बिकॉज आई एम फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड एंड यू नो कि इंजीनियरिंग गाइस को थोड़ा सा एज रहता है, वो कहीं भी घुस सकते हैं फौज में, उनके पास पूरी मौके हैं. एंड नेवी में इंजीनियर्स के लिए एक मौका था ऑब्जर्वर बनने का, एंड देन एटीसी भी होता था. एंड यू फॉर्चुनेटली यू आर एन एटीसी ऑफिसर. तो Yes. मैं ये जानना चाहूंगा कि हाउ वाज योर जर्नी एज एन एटीसी ऑफिसर. एटीसी क्या है? थोड़ा सा, अभी तक कोई भी ऐसा ऑफिसर हमारे प्लेटफॉर्म पे नहीं आया जिन्होंने एटीसी के बारे में हमने बात करी हो. व्हाट डज एन एटीसी ऑफिसर डू? क्या रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज रहती हैं, एंड हाउ एंजॉयबल द जॉब इज? बिकॉज एफकैट से एटीसी ऑफिसर्स बनते हैं, नेवी में डायरेक्ट एंट्री जाती है एटीसी ऑफिसर्स की. तो वो थोड़ा सा आप बताओ इनको बच्चों को कि कैसे ये उसको देखें, हाउ दीस गाइस टू लुक अप टू एज एन एटीसी ऑफिसर, कैसे बनना है, क्या ट्रेड्स चाहिए, और कितना मजेदार ये जॉब है, प्रोफेशन है बेसिकली. It's like a video game, है ना? It's like a video game. You're sitting at one place and you're seeing so many aircrafts flying, and you are the cause. Like you are the one who's making them fly at a particular level, giving them certain positions and reporting points and all that. So बहुत ही मज़ेदार है. वैसे तो बहुत सेटिस्फाइंग है एटीसी जॉब. और जब आप 8 घंटे की ड्यूटी के बाद जाते हो घर, तो आपका माइंड अभी भी रहा है. जैसे वीडियो गेम आप छोड़ते हो तो भी काफ़ी देर तक एक्टिव रहता है, उसी तरीके से जब आप घर जाते हो तो वो चल रहा होता है. आपका दिमाग इतना तेज रहता है, आपको पता चल रहा होता है कि यू आर नॉट एबल टू रेस्ट, यू आर नॉट एबल टू स्लीप, बिकॉज 8 घंटे यू कंटिन्यूसली यू जस्ट इनटू इट. तो इट्स फन. एटीसी ऑफिसर्स की स्पेशलिटी है कि वो मल्टीटास्क कर सकते हैं, बहुत अच्छे से मल्टीटास्क करते हैं, क्योंकि वो एक समय पे वो स्क्रीन पे रडार को भी देख रहे हैं, जहाँ पे आपके पास 15-16 एयरक्राफ्ट है. एक समय में आप उनको कंट्रोल कर रहे हो, डायरेक्शंस दे रहे हो और लैंडिंग करा रहे हो, और दूसरे वहाँ पे आप ये कर रहे हो, वहाँ पे देख रहे हो. आप रनवे पे भी देख रहे हो कि रनवे पे फ्लाइट पाथ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शंस तो नहीं है, कोई बर्ड तो नहीं है, कोई गाड़ी वाड़ी तो नहीं क्रॉस कर ली है गलती से, वो आप देख रहे हो. और अगर खुदा न खास्ता अगर कोई छोटा सा भी कोई माल फंक्शन है एयरक्राफ्ट में, तो आपकी जो फायर फाइटिंग ये फायर टेंडर्स हैं वो रेडी होने चाहिए. उनका रिस्पॉन्स जो है बहुत ही अच्छा होना चाहिए. Within a few minutes, within a few seconds, I will say 90 seconds or something. तो ये सारी चीजें प्लस इसके अलावा भी वो कॉल्स लेते हैं किसी और एरिया से, एयरपोर्ट से, और उनको आंसर करना पड़ता है. प्लस इसके अलावा मतलब आर्म्ड फोर्सेस में इसके अलावा वो
मेस सेक्रेटरी का भी जॉब कर लेंगे, वो स्पोर्ट्स ऑफिसर भी बनेंगे, वो और भी कुछ मतलब लाइसेंस ड्यूटीज भी करेंगे. सो ये तो एडिशनल है, ठीक है. बट ATC पर से बहुत ही एंजॉयबल है, बहुत ही ज़्यादा फन है और बहुत सेटिस्फाइंग है और बहुत मज़ा आता है. आई रियली समटाइम्स मिस जस्ट दैट पार्ट, नथिंग एल्स बट that part when I used to sit and sometimes pilots said very good ma'am, or some commercial pilots used to be there, ma'am lovely voice, ऐसे ही क्या पता ऐसे ही बोल देते हो ये तो whatever, but it used to feel nice, used to feel. मतलब it's an amazing and awesome job, I must say. मतलब you thoroughly enjoyed it. मजा आया आपको, मतलब being an ATC, like that was my plan B actually, and I still have the opportunities open as an like Airport Authority of India में as an ATC. You do have you certainly do have, but you have to I think write some exams, but you can crack. You're such a hardworking guy, आपने इतने बड़े exams clear कर लिए हैं, तो you can definitely, yeah, it's a great job and very well paid job, and if you go out UAE and all, you really get paid well. मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है, ठीक है, मुझे अपना देश बहुत प्यारा है, but really some of my seniors have gone and they are really earning very 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 well. Yes. So all the people who are listening to us, I would say कि being an ATC is also a very charming and very very responsibility वाला position. आप एग्जाम्स पास कर सकते हो, जैसे AFCAT के थ्रू आप ATC बन सकते हो, आप नेवी में डायरेक्ट एंट्री से ATC बन सकते हो. जहाँ पे भी रिटन एग्जाम में यू नीड हेल्प, यू हैव माय बैक, आप मेरे पास आओ, आई विल ट्रेन यू, आई विल guide you how you can crack NDA, CDS, AFCAT, whatever exam you are struggling with, और डिफेंस एग्जाम मास्टरी आप फॉलो करके हमें ज्वाइन कर सकते हैं. मैम अगला सवाल आता है कि जैसे आपका जो टेन्योर रहा आफ्टर ATC, व्हाट आर यू डूइंग अभी आप क्या करते हो? व्हाट इज द सेकेंडरी थिंग दैट यू आर डूइंग आफ्टर द नेवी टेन्योर? I am building my empire slowly and steadily. Okay, I am a life coach because I was drawn into coaching, mentoring, and these things because my father was a teacher and head of the department. So whenever, in fact, in the Navy also, when I used to I was there. Some students of his, they used to come and they used to recognize me just because of my name, and they used to come and ask me, "Are you Giri sir's daughter? I mean, he taught us. He was my best teacher, and he taught us this and that." So it really felt nice. So somewhere or the other, coaching thing is in my blood. Plus, being the eldest of 4, I always guided my sisters. Always, mentored them. My younger sister is still serving in the Indian Navy. So I thought coaching is the best thing for me, and this is something where now I realize that I have this. COVID actually brought this realization that I have this power to just sit in the comfort of my house and take a session. Any client calls and I just have the time in my hand, and I can decide when I am available for the individual, and I can operate within the framework of my other things that is going around me. Like being a mom is being a mother is actually a full-time job, no matter what. I think the constant of the society, fathers are always busy earning and providing, and somehow the responsibility shifts on the mother, that you take care of the children, you take care of their studies and their routine and everything. So I do that while I also I do coaching, online coaching, and speaking. Sometimes I get invited to some news channels, and people like you invite me and they speak to me. So I feel nice about it. And also I have a small I'll say I've just started. It is a journal business, diary and journal, which I'm operating on Amazon. So I help people because I realize that if there is one thing which I would say which worked for me
and which will work for everyone, whoever is listening, that is writing your journal, making your plans, you know, and definitely it will stand you apart. You will lead the best life. You will make the most contribution to the world. There is a research which has been done, and I was so convinced, and I used to suggest these to my coaching clients, and then I thought, okay, why not have my own journal with, and I designed the journal with all the things in it, you know, that you have to take care, that you have to journal every day. For example, gratitude being one, and affirmations, and you know, tracking your habits, so on and so forth. And so you know, they are based on positive psychology, and they're very powerful. They're based on the research done by Harvard, and it is there. It is operating online. I don't have to do anything. So Amazon is handling it. So that is one. Plus, I'm also getting into another business. The formalities are going on. So let's see. I'm excited about it. Let's see how. I'm both excited and nervous also. So let's see what happens. But then I already have so much in my plate which I'm enjoying. But I always like to do extra. I always like to try something new and more, something challenging. And I think the project, the other business which I'm getting into is something which I've never done. Nobody in my family has ever done. And yeah, so I'm doing that. So let's see how it turns out. Ma'am, a lot of similarity has been like there among both of us. Like my father is also a teacher. I am the eldest among the 4 siblings. And काफी सारी चीजों से मैं रिलेट कर पाया आपकी बातों से. तो जो बड़ा बच्चा होता है ना, उसकी जिम्मेदारी बहुत होती है. तो वो ना जो भी करेगा लाइफ में, उसको एक ट्रेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो हार नहीं मान सकता. Because there are lot of things on the stake. Yeah. Because you will be letting down your parents, you will be letting down your siblings. If you gave up, बहुत सारे लोगों की उम्मीदें टूट जाएंगी. बहुत सारे लोग आपको एज अ आशा भरी नजरों से देख रहे हैं. So I think I was really like mesmerized by like listening to your life journey, and my best wishes for your future ventures also, जो भी आप प्लान कर रहे हो. एंड आप इतने एक legendary personality हो. मैं आपको काफी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, बट मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था unfortunately due to my hectic schedule. But it was that you said journaling, मैम. तो I'm a huge fan of journaling. मैं कुछ भी करता हूँ, मैं हर दिन डायरी जरूर लिखता हूँ. I used to do a lot of journaling. साल में 15-20 डायरियां भर जाती होंगी मेरी. Every time I do something, I write a lot, ma'am. 10 to 12 pages a day I write on a daily basis. वो SSB के टाइम से पहले 2-3 साल पहले ही स्टार्ट किया था, and it has helped me become a better individual in life also, and become a better leader. Because in my workplace also I have a team that I handle, and then उनको भी गाइड करने में काफी हेल्प मिलती है. तो मैं अगला सवाल आएगा मेरा. Sorry to interrupt. तो मेरा जर्नल था that helped my younger sister, and she cracked her interview in first go. You understand? तो कोई रहता है थोड़ा तो गाइडेंस मैंने तो बहुत एक्टिवली थी, बट जो भी मैं कर पाई, और मेरे जो जर्नल्स जो घर पे पड़े हुए थे, she could refer them and she could perform really well. So it's really powerful. Right. तो मैम बेसिकली मेरे जब मैं एसएसबी देता था तो मैं काफी सारी चीजें लिखता था. जो मेरे जो क्वेश्चन सेट्स होते थे ना, मैं फोटो खींच के अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे डालता हूँ मुझे बच्चों को, तो उनकी मेहनत काफी सेव हो जाती है. वो भी रेफर करते हैं तो काफी हेल्प मिलती है. एंड लॉट ऑफ गाइस गॉट रिकमेंडेड टू आफ्टर लिसनिंग टू देम और जस्ट रेफरिंग टू देम. एट इंडीड इट्स बीन अ वेरी ग्रेट जर्नी. अगला सवाल आएगा मैम मेरा आपसे कि लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज कि प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे में आपने बोला कि आज में प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे में आप बात करने वाले हो. और मैम दिस इज अ वेरी वेरी मेजर कंसर्न कि बच्चे बहुत ज्यादा डिले करते हैं चीजों को. दे कीप अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन द प्लेट, पूरा नहीं कर पाते, फिर उनको डिप्रेशन होता है, और फिर वो उनके अंदर पेशेंस भी नहीं है. दिस यंगर जनरेशन डू नॉट हैव द पेशेंस. हम लोग लकी थे कि हम प्री जियो एज के हैं. मैं प्री जियो से पहले का हूँ. जियो आने के बाद मैम अटेंशन स्पैन जो है बच्चों का 5 सेकंड 6 सेकंड से ज्यादा का नहीं है. अगर उनको 5-6 सेकंड में चीजें समझ में आ रही है तो वो देखेंगे, अदरवाइज दे विल जस्ट स्किप एंड दे वेंट ऑन टू द नेक्स्ट थिंग. ऐसे करते करते ना 2-3 घंटे 4 घंटे उनके बर्बाद हो जाते हैं, और उनका जो लाइफ का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है या गोल है वो मैम पूरा नहीं हो पाता.
उस प्रोक्रेस्टिनेशन को कैसे टैकल करें, कैसे अच्छी एक लाइफ लीड करें, उसके बारे में आपका क्या टेक रहेगा? तो प्रोक्रेस्टिनेशन, मैंने आज ही एक वीडियो बनाया है. प्रोक्रेस्टिनेशन एक्चुअली इज व्हेन यू डिले, नोइंग द कॉन्सिक्वेंस, यू डिले योर और उसको पोस्टपोन करना, तो ये होता है. बहुत सारे कारण हैं, मैं 2-3 कारण डिस्कस करूंगी आज. नंबर 1 है, बहुत सारे रीजंस हैं, तो लेट मी नेम आउट द रीजंस. नंबर 1 इज परफेक्शनिज्म, नंबर 2 इज सेल्फ एस्टीम, नंबर 3 इज अवॉइडेंस, then there is fear of failure, then there is decision fatigue, and many. But first 3 I will like to say, because generally the first 3 is something which we all go through. I am a human being, we are all human beings, and we all at some point or the other sometimes go through these things, and we deal with these things. So number 1 is, like I said, perfectionism. मतलब एक सिंड्रोम है ये, जिसमें आप या तो आपको परफेक्ट काम करना है, ओके. आप यू डोंट वांट टू मेक एनी मिस्टेक, एंड यू आर नर्वस अबाउट you're nervous about not trying, and you are actually you fall into this extreme category. या तो आप कुछ नहीं करोगे या आप बहुत अच्छा करोगे. So this is the mindset of the people who are procrastinator, who are perfectionist, and because of being perfectionist, they are not able to move ahead in life because they don't want to make it. So the remedy for it is that, see, we all make mistakes. अगर mistakes नहीं करेंगे तो सीखेंगे नहीं, और सीखेंगे नहीं तो better नहीं होंगे. ठीक है, ऐसा कोई नहीं है जो mistakes नहीं कर रहा है. कोई भी आप ले लीजिए, कोई भी किसी भी फील्ड में, वो हर दिन प्रैक्टिस करते हैं, वो हर दिन मिस्टेक्स करते हैं, वो अपने लिए उससे बेहतर एक गोल बनाते हैं और उसे अचीव करने की कोशिश करते हैं. वो फेल भी होते हैं, लेकिन वो फिर से उस गोल को हासिल करने के लिए दे टेक एफर्ट्स. So if you don't make mistakes, so definitely the growth will stop. It is a kind of stagnation. Perfectionism is a stagnation. तो क्या करना है आपको फिर आपको 2 कैटेगरी में फॉल होना है, ठीक है. Like I said, these people fall in 2 categories, nothing or everything, the best or nothing. So all or nothing, like something like this. But what you should aim for is, it is nothing, or it can be something. It can be something, you don't have to be 100% best. While you try to be, but if you are 70%, you come out to be 70%, that's fine. You still moving ahead. कई बार ऐसा हुआ है मेरे साथ लाइफ में, कुछ ऐसी चीजें हैंडल हो रही हैं कि आई एम नॉट satisfied, but at least I moved forward. I moved ahead in life while I was doing it. So perfectionism अगर आपके अंदर है तो try to deal with it. आप उसको लिखिए जो आपको टास्क करना है, और उसको ब्रेक करिए, और थोड़ा थोड़ा करके उसको आगे लेके जाइए, उस काम को, उस गोल को अचीव करने के लिए. नंबर 2 इज सेल्फ एस्टीम. नाउ सेल्फ एस्टीम की वजह से बहुत सारे लोगों के अंदर जो सेल्फ एस्टीम की कमी होती है, उसकी वजह से काफ़ी ये प्रॉब्लम आती है. प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं. क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें उनके अंदर एक सेल्फ डेप्रिकेटिंग थॉट है, एंड दे गिव इन टू दोज थॉट्स आर लाइक लोग क्या कहेंगे, या अगर मैंने बड़ी मिस्टेक कर दी तो क्या होगा, मैं फेल हो जाऊंगा, व्हाट इफ आई फेल. All these thoughts they just given, and these are very natural thoughts. We all have these thoughts. It's only how we manage these thoughts. It's how we tackle our mind, how we fill our mind with positive thoughts. So not to give in to this self-esteem issue. Surround yourself with positive people. Write down your journal. That really helps. Do affirmations. Okay, do affirmations, and chote, like I said, make small goals and achieve them one by one. And once you achieve them, वो अंदर से एक
डोपामाइन रिलीज होगा, आपको अच्छा लगेगा जब आप बड़े गोल को छोटे गोल्स में ब्रेक करके उसे अचीव करते हो, तो आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलता है, और आपको मोटिवेशन मिलता है उससे, और आप और बेहतर करते हो, और आपका अचीविंग योर गोल बिकम्स ईजियर। ये एक है सेल्फ एस्टीम को डील करने का तरीका। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आपको you can take some help of a coach like life coaches and psychologist or counselor, so on and so forth. Number 3 is avoidance. Why do people avoid? So people avoid because they have certain emotions which they don't want to face. For example, some uncomfortable emotions, fear, stress, you know, they want to avoid these emotions, and because of these, what they do is they postpone, and they do something which is easier just to fool their mind. They do something which is easy. For example, they always seek reward which is right now. मतलब अगर मुझे मेरे सामने केक पड़ा है, but suppose I have to be healthy, I know I have to be healthy, but मेरे सामने केक पड़ा है, तो I will eat the cake first if I am someone like that, someone who's a procrastinator and someone who's always trying to avoid because I want to avoid, because I don't want to feel those feelings of, I don't want to feel uncomfortable, I don't want to feel I don't want to have that sense of fear and all those things. So what happens, I eat the cake, and I will just seek that reward of eating the cake rather than thinking of the long-term aim of staying fit, you know. So likewise, it is just an example, very rough, crude example, but something like that. You always seek a reward which is right now in the moment rather than something which is far ahead in the future. You don't think, आपके साथ प्रॉब्लम होती है कि आप फ्यूचर को ज्यादा आप फ्यूचर के बारे में नहीं सोच पाते हैं. बेसिकली you are afraid of the future. You are not able to see yourself in positive light in future. तो आप अभी जो आपको रिवॉर्ड मिलता है, अभी में जो खुशी मिलती है, आप वही करते हो, इजी चीजें करते हो, और फिर you become a mediocre, you become someone who's not able to achieve your life. So the best way to do is, like I said, there's something called as deal with the emotions. Definitely anything good is painful. कभी भी कोई चीज आसानी से नहीं मिलती है ना. So I know, and you also might be you also have gone through that when you must have failed in some exam or some SSB. It's a pain, you go through, because there's a dream which was shattered, but you still got up and you still made up your mind and you still prepared for your next SSB, and you went ahead with a positive positive frame of mind and a positive thought that in future I might clear, like I might clear this time. So these people are not able to do that. So what this can seek help if you're not able to do it on your own. Go through stresses. We all have stresses. We all have some fear, and break your have a big goal, but break them into smaller chunks and try to achieve those goals one by one. For example, अगर आपको पता है कि मेरे अंदर ये कमी है, तो आप अगर मेरे अंदर communication skill अच्छे नहीं है मेरे, and that is why I'm not able to crack my screening probably. You have a bigger goal, but you know that उसमें ये hurdles हैं. मेरी communication skill अच्छी नहीं है, मेरा ये सही नहीं है, मेरा fitness level, agility वहाँ पे मैं मार खा रहा हूँ. You have to prepare. These things are important. So these qualities are just. So you will prepare yourself. You will go get some training in communication skill, or you will do some self work. You will probably try to stay fit, and you will join some fitness session, or
you will do something on your own maybe, but you will definitely will. So one thing I always, how I evaluate my life, अगर मुझे लगता है कभी कभी हम सभी के साथ होता है, हम अपनी लाइफ थोड़ा कंपेयर करने लगते हैं कि अरे उसके लाइफ में तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, बट वो उसके लाइफ की हाईलाइट है, हम उसके लाइफ के प्रॉब्लम्स को नहीं जान पाते हैं. अगर आपको भी मेरे लाइफ के में सब अच्छा दिख रहा है मेरे इंस्टा हैंडल को देख के, सो maybe that is not the reality. In the background, maybe I'm going through a lot. I'm just giving an example. Maybe I'm going through a lot. I'm dealing with a lot of things. So don't compare your life, and work on yourself. Make a dream, a goal, and make a plan as to how you will achieve, and take actions. Evaluate your actions. अगर इस समय मुझे मान लीजिए मुझे एक एंटरप्रेन्योर बनना है, ठीक है, एंड आई वांट टू हैव अ बिजनेस व्हिच इज से 100 crore बिजनेस, तो आज मैं उस बिजनेस के लिए मैं व्हाट एम आई डूइंग फॉर दैट, फॉर दैट मूव क्लोजर टू माय ड्रीम. आई हैव टू इवैल्यूएट एवरी डे. So if I get an answer yes, then yeah, so we can all do that. Every day evaluate yourself, sit down with your journal, and compare yourself that you were yesterday and today. What have you done to achieve your goal? Okay, so this is the way you can deal with procrastination. And yeah, I hope इतने कम समय में जो मैंने समझाया आप लोगों को समझ में आ गया है, और नहीं आया तो I will make more videos. Probably today I explained in a very short time. I explained in my video, in my page, I explained what is say for example, I think I spoke about self-esteem. So self-esteem की problem है. 85% of people have this problem with some degree. So if you also have some problem, then seek help from people. Surround yourself with positive people, cut off from negative people, and seek help. Or suggest yourself positive things in life. So that's how you deal with procrastination. और जब आपके जो आपका जब गोल बहुत स्ट्रॉन्ग होता है ना, how to say, तो ये सारी चीजें तो आप फेस नहीं करते हो. जब गोल बहुत एक क्रेजी लेवल पे आप उस चीज को चाहते हो, बहुत आपकी डिजायर बहुत ही बर्निंग डिजायर है, लाइक दिस से, तब आप प्रोक्रेस्टिनेशन वगैरह कुछ नहीं आता है. तब आपको पता है you sit down, even if you have to wake up at 4 o'clock, you know that you are going to do, because your dreams are more important than sleeping those extra 2-3 hours. You know that. So अगर और आप इसीलिए अचीव करोगे क्योंकि आप डिफिकल्ट चीजें कर रहे हो, आप कंफर्ट जोन से बाहर आके आप कर रहे हो और अपनी ड्रीम्स के लिए एक्शंस ले रहे हो. You're waking up at 4 o'clock, going, reading something, preparing something, going for run, and so whatever it may be for you, you're doing that. Exactly, ma'am. And बहुत सारी चीजें आपने बताई हैं, और मैं ये this session will go on YouTube, and ये सेव रहेगा फॉर लाइफ, फॉर द किड्स टू लिसन टू. एंड यहाँ पे जैसे मैम ने बात किया प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे में, सेल्फ स्टीम के बारे में, यहाँ पे मैं व्यूअर्स को 2 चीजें रिकमेंड करूंगा. आई वांट यू टू रीड अ बुक बाय जिग जिगलर कॉल्ड सी यू एट द टॉप. दैट होल बुक इज अबाउट सेल्फ स्टीम. बहुत अच्छी किताब है, मैंने काफी पढ़ी है, काफी बार मैं पढ़ता हूँ, 7-8 times I have read it. And I would also recommend one movie to you, The Shawshank Redemption. इसको भी आप देखो, उसमें आपको होप के बारे में जानकारी मिलेगी. तो प्रोक्रेस्टिनेशन तब आएगा जब आपका गोल बहुत छोटा होगा. प्रोक्रेस्टिनेशन तब नहीं आएगा जब आपका गोल बड़ा है, आपके सपने बड़े हैं और आपके अंदर करने का जज्बा है. तो जज्बा जगा के रखना है. ऐसे ही इंस्पिरेशन लेनी है हमारे इतने प्यारे सीनियर्स से. एंड थैंक यू सो मच मैम फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे ऑन डिफेंस एग्जाम मास्टरी. एंड थैंक यू टू ऑल द व्यूअर्स जो इतने पेशेंस के साथ बच्चे सुनते रहे. एंड आई विल सी यू इन द यूनिफॉर्म सून गाइस. जय हिंद मैम. Thank you Shivam, very well conducted. Bye everyone. Bye. Dear students, जय हिंद. और मेरा नाम है शिवम सारस्वत एंड आई एम द फाउंडर ऑफ डिफेंस एग्जाम मास्टरी. डिफेंस एग्जाम मास्टरी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको NDA, CDS, AFCAT
टेरिटोरियल आर्मी और एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी कराई जाती है विद 101 मेंटरशिप एंड पर्सनल हैंड होल्डिंग सपोर्ट। हमारी टीम में मल्टीपल ईयर एक्सपीरियंस वाले फैकल्टीज एंड ट्रेनर्स हैं जो आपको गाइड करेंगे टिल द टाइम यू जॉइन द अकेडमी। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारी एक पॉडकास्ट सीरीज आती है टॉक विद द लीजेंड्स जो हमारे यूट्यूब चैनल पे रहती है, आप उसको देख के इंस्पिरेशन ले सकते हैं, जहाँ पे एक्स ऑफिसर्स अपनी जर्नी शेयर करते हैं आपके साथ। आई विल सी यू इन द यूनिफॉर्म सून। जय हिंद।